बोल के देखता हूँ मैं, लेकिन उधर ही नहीं छुपा हूँ जगह उधर। चल थोड़ा देखा मेरे को समझ में हाँ कहाँ काटना पड़ेगा एक बार लगा देखता हूँ। टूटा हुआ तो नहीं चाहिए। हाँ
बाहर फैल गया वो खींच दिया खींचा ना हेलो फ्रेंड्स, एक बोलेरो प्लस है जिसका काफ़ी डैमेज हो चुका था। इसमें फ्रंट साइड में डैमेज हुआ है, जिसमें फेंडर चेंज हो रहा है, फेंडर उसके बाद पावर टॉप रिपेयर हो रहा है और ग्लास फ्रेम भी रिपेयर हो रहा है। काफ़ी डैमेज था, इसकी ग्लास फ्रेम रिपेयर के लिए डैशबोर्ड खोला गया दोस्तों। उसके बाद फ्रेंड्स सामने का बम्पर बम्पर और रेडिएटर भी नया डालना पड़ रहा है और ग्लास सामने का ग्लास डैमेज था। बोलेरो का डोर का रिपेयर हो रहा है, राइट साइड फ्रंट फ्रेंड्स पूरा पार्ट से निकालना पड़ा, डेंट निकालना पड़े कूलर से खींचेंगे फ्रेंड्स और लेवल कवर करेंगे। हेलो फ्रेंड्स बोलेरो प्लस में अभी हेडलाइट सेटिंग हो रहा है, फेसियर डालते हैं, फेसियर को सेटिंग करेंगे फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रंट बम्पर डालेंगे, इधर इस साइड में फ्रंट और रिपेयर हो रहा है राइट का, ग्लास फ्रेम रिपेयर हो चुका है फ्रेंड्स। अभी इसमें सेटिंग करना बचा है और नीचे साइड में वेल्डिंग हो चुका है, हल्का सा डैमेज था, वेल्ड हो चुका है और उसमें सेंडिंग भी करना बचा है फ्रेंड्स। और ये दिनेश जी हैं, ये देखो डेंटिंग कर रहे हैं, लग रहा है गुस्से से देख रहे हैं फ्रेंड्स। इधर बना का डेंट रिपेयर हो रहा है, सेंडिंग का फ्रेंड्स इसमें डेंट प्लस से जा रहा है, काफ़ी डैमेज था, डैमेज सुधारा जा रहा है फ्रेंड्स। उसके बाद इसको पुट्टी का प्रोसेस चलेगा। अभी पूरा लाइन लेवल डेंट रिपेयर का वर्क चल रहा है। बोलेरो में फुटेज डालना भी बचा है फ्रेंड्स। फ्रंट और रिपेयर होने के बाद फुटेज को सेटिंग करेंगे। तो भी सेटिंग किया जा रहा है, हेडलाइट सही से नहीं बैठा है।
हैंडलाइट सेटिंग करने के फिर एशिया को थोड़ा सेट करना पड़ रहा है। इसका लाइन लेवल अच्छे से करेंगे फ्रेंड्स, तब इसका अच्छे से पेंटिंग भी होगा फ्रेंड्स, और इसका लुक भी अच्छे से आएगा। बोनट को सेट किया जा रहा है यहाँ पे। बोनट को अच्छी तरह सेटिंग कर रहे हैं। एशिया और फ्रंट बम्पर सेट हो चुका है फ्रेंड्स। ग्रिल भी डाला है, हेडलाइट भी डल गया है। बोनट सेटिंग करके फिर पेंटिंग वर्क में देंगे इसको।